हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, वो हॉलीडे सीज़न आ गया है इन 2022 और हम 2023 की ओर बढ़ रहे हैं। और ये है जब काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। सो मैंने अपने चैनल में कश्मीर के ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए थे, बट आज भी मुझे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कश्मीर ट्रैवल करना है और हमें एक आइटनरी बना के दीजिए या हमको वहाँ के अच्छे लोकेशंस का नॉलेज दीजिए। जैसे हम सब जानते हैं, जैसे इंडिया में स्वर्ग है तो वही है कश्मीर में। सो कश्मीर का जो एक टोपोग्राफी है वो अनमैच्ड है दोस्तों। एंड आपको इस तरह का जो वैरायटी है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे कुछ कश्मीर के 2-3 वीडियोस क्लब करके आपको बेस्ट ऑफ कश्मीर का एक नॉलेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको एक सिंपल मैप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। जैसे आप देख सकते हैं, श्रीनगर ये है कश्मीर का कैपिटल सिटी। और मेनली हम यहीं पर लैंड करेंगे और यहाँ से हम चलेंगे सोनमार्ग की ओर, जो आप देख पा रहे हो। एंड सोनमार्ग बहुत ही सुंदर सा एक कस्बा है। और ये सोनमार्ग हम कवर करेंगे, उसके सारे होटल्स, इसके सारे जो मार्केट प्लेस और काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ये बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, सोनमार्ग। और जो सेकेंड लोकेशन है बेस्ट ऑफ कश्मीर, वो मैं आपको ले चलूँगा गुलमार्ग। और गुलमार्ग भी बहुत ही सुंदर है, जिसे स्की लोकेशन कहते हैं। और जैसे जनवरी फरवरी में यहाँ पर जैसे ज़ोरदार बर्फ़ पड़ती है तो लोग स्कीइंग के लिए काफ़ी सारे आते हैं। तो दोस्तों, हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और ये होगा बेस्ट ऑफ कश्मीर। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ सोनमार्ग। आइए। Hello guys, welcome back to my channel Vagabond Travel for a Purpose. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज सुबह को काफ़ी जल्दी उठ गया हूँ मैं। आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर माय नेक्स्ट ट्रिप फ्रॉम श्रीनगर। तो इस समय हम हैं श्रीनगर में, बोलेवर्ड रोड कहते हैं इसे। एंड होटल का नाम है होटल वेलकम। So we are starting our journey today morning from Srinagar to Sonmarg. Sonmarg, जिसे Meadow of Gold कहते हैं, it's a beautiful place with so many glaciers and the great Tajiwas Glacier. तो यही सब देखने जा रहे हैं। At this moment I'm near Dal Lake and ये मेरा 4th time है in Kashmir. I am seeing a lot of military activities out here. That means कि there is something for which the military is deployed at every 500 meters the lake, but it's very safe for tourists क्योंकि military भी हमारी सेवा में है and प्रशासन भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं for the tourism. So I believe कि tourism and tourist के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है and we can come at any time and as we like at that set, but we need to obey the instructions and we need to follow the rules. Most welcome and accompany me on my journey from Srinagar to Sonmarg. आपको roads वगैरह दिखा देते हैं। Road conditions are beautiful and it's a wonderful highway out here. तो साथ चलेंगे और आपको एक एक जगह रुक रुक के हम काफ़ी कुछ बताएंगे। पता नहीं सोनमार्ग में हम शूटिंग कर पाएंगे कि नहीं बिकॉज ऑफ द हेवी स्नोफॉल। और अगर स्नो कुछ देर के लिए ढला तो मैं आपको काफ़ी कुछ रोड्स भी दिखा दूँगा सोनमार्ग में। एंड द प्लान इज़ टू स्टॉप ओवर एट सोनमार्ग फॉर नेक्स्ट 4 days. सो वैसे भी घूमना फिरना तो होगा सोनमार्ग में, जैसे 0 पॉइंट है कि हमारी गाड़ी इनोवा अभी आती होगी। द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन बोलेवर्ड रोड इज़ यू हैव अ गवर्नमेंट टैक्सी स्टैंड जस्ट नेक्स्ट डोर टू यू। तो वही हमने बुक की हुई गाड़ी एंड इट कॉस्टेड मी अबाउट 3700 फॉर सोनमार्ग ड्रॉप। सो यही सब आपसे कहना था एंड बाकी आप देखिए वीडियो एंड यू बी द जज कि क्या कैसा है ये रास्ता एंड हाउ दिस प्लेस इज़ इट ट्रूली जन्नत। अब ये सुबह का दृश्य है जब आप देख रहे हैं द डल लेक, द डेजर्टेड डल लेक रादर, लुकिंग एज ब्यूटिफुल एज एवर विथ द ब्यूटिफुल शिकारा राइड्स एंड द हाउस बोट्स। तो हमारी गाड़ी अब आने में कुछ देर है। सो
We are just awaiting this. एट दिस मोमेंट हम लोग हैं गंदरबल से थोड़ा आगे, इसे कहते हैं सिंध नाला एंड दिस इज़ द सिंध रिवर जो फ्लो होता है टुवर्ड्स सोनमर्ग। मैं आपको इसका एक नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं पानी का बहाव है काफ़ी, बट बीइंग विंटर थोड़ा सा कम है नॉर्मल से। सो देख लीजिए आप अच्छे से। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। द माउंटेन्स ऑफ Kashmir and the Sindh Nala, as it is called, the most beautiful river, Sindh River. ये है वो ब्रिज अक्रॉस द सिंध रिवर जो हम क्रॉस कर रहे हैं टुवर्ड्स सोनमर्ग। तो इट सीम्स काफ़ी लोग आए नहीं हैं यहाँ पे, सिर्फ हम ही लोग हैं। एंड मे बी ड्यू टू द स्नो स्टॉर्म ऑल्सो जस्ट खुशी रहे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं। वी आर हाफ वे टू सोनमार्ग एंड आपको कुछ नज़ारे दिखाने के लिए रुक गया हो यहाँ पे। एंड देखिए क्या ब्यूटीफुल, क्या किस तरह के नज़ारे दिख रहे हैं। वी आर एब्सोल्यूट इन द मिडल ऑफ सम ब्यूटीफुल माउंटेन्स, सम ब्यूटीफुल ग्लेशियर्स। चलिए आपको एक कैमरा घुमा देता हूँ ताकि आप थोड़ा नज़दीक से देख सकें। काफ़ी आर्मी ट्रक्स भी है इस रास्ते पर। Just look at the beauty. Just look at the beauty. This is Kashmir for you. This is the way to Sonmarg. जब आप भी रुकेंगे तो यहाँ पे ज़रूर, आप भी चलेंगे सोनमार्ग की ओर तो यहाँ पे ज़रूर रुकिए। चलिए अब आगे चलते हैं।
हे फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हैं सोनमार्ग में। चलिए आपको एक टूर घुमा लाएं, एक मार्केट तक चलते हैं, क्योंकि इट सीम्स हेवी स्नो शावर इज़ एक्सपेक्टेड एनी टाइम। एंड जैसे आप अभी देख रहे हैं, बस ये पूरा बर्फ़ में ढका होगा। चलिए मैं आपको कैमरा घुमा देता हूँ ताकि आप भी थोड़ा कुछ देख सकें। दिस इज़ द नेचुरल ब्यूटी दैट वी आर ऑल स्पीकिंग अबाउट, सोनमार्ग। तो ये है मार्केट का रास्ता। एंड मैं निकला तो हूँ, बट आई जस्ट होप हेवी स्नो शावर शुरू ना हो जाए अभी, बिकॉज इट सीम्स स्लाइट फ्लेकिंग हो रहा है अभी। एंड टाइम है अराउंड 12 o'clock। या आई थिंक इट्स फ्लेकिंग। जहाँ देखो बस बर्फ़ ही बर्फ़। सिर्फ इतना एक गुड थिंग दैट वी कैन एटलीस्ट सी दोज ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ द बर्फ़। बट फ्यू मोमेंट्स लेटर ऑल दिस विल बी वाइट वाइट एंड वाइट। और ये रूफ़ आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि कुछ देर बाद ये रूफ़ के ऊपर पूरी बर्फ़ होगी। कंपैरिजन मैं आपको दिखा दूँगा थोड़ी देर बाद, या फिर आज शाम को अगर आ पाया तो, या फिर कल आपको दिखा दूंगा इसका एक कंपैरिजन। इंपीरियल रिजॉर्ट्स विच आई हैड बुक्ड अर्लियर बट later changed it to country in suites. And this is hotel Barzan, another beautiful property in Sonmarg. वैसे मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल आइडिया। यदि आप सोनमार्ग आओ तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ में यू कैन हॉल्ट। एंड आई वुड प्रेफर स्टॉपिंग ओवर हियर फॉर अ कपल और 3 days, तो आप ये ब्यूटी का पूरी तरह से आनंद ले सको। और दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं सिंध नदी जो अपना रास्ता बनाते हुए आ रही है बर्फ़ के बीच में से, बर्फ़ के चट्टानों से। और ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है बर्फ़ की चट्टान, अगर भगवान ने चाहा तो हम उसके पास भी जाकर आपको नज़ारा दिखाएंगे। मगर इस समय जैसे आप देख सकते हैं फ्लेकिंग शुरू होगी, तो लेट्स सी कैसे होता है आज या कल का नज़ारा। Himal Hotel and Restaurant, one of the good hotels to stay and for your food. इसके बगल में ही है डोगरा वैष्णो भोजनालय। आई थिंक वन ऑफ द फ्यू प्योर वेजिटेरियन आउटलेट्स, यदि आप प्योर वेज खाना चाहो तो। ये जो आप देख रहे हैं JNKTC के टूरिज़म प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड दीज आर वेरी गुड प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली। एंड JNK tourism always have their property in the best of locations. This is situated in the main market, so this is a good option for you for a stay in Sonmarg. एंड इसके सीनरीज भी बहुत खूबसूरत है। चलो भाई, आई थिंक स्नो इज स्टार्टिंग नाउ। हल्का फ्लेकिंग शुरू हो गया है। I just hope I can reach back my hotel before it starts showering. ये है पैराडाइज ऑन अर्थ होटल। इसे होटलों की कोई कमी नहीं है। There are loads of hotels here and all of them are quite good. Every hotel has a beautiful scenery. Everyone offers a scenery to you. So this is how it is. ये है मेन मार्केट। Now I think I should rush back to my hotel before it starts a snow shower. चलिए, back to hotel.
जैसे आप देख सकते हैं सोनमार्ग स्नोइंग शुरू हो गया है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ डोगरा वैष्णो ढाबा के ऑपोजिट एंड दिस इज़ अ वेरी गुड होटल रेस्टोरेंट फॉर फूड. Just had my lunch in Dogra and the food is quite good, I can assure you. तो जैसे मैं आपको कैमरा घुमा देता हूँ, आप भी देख लीजिए. This is a good outlet for food, Dogra वैष्णो ढाबा, and this is the सोनमार्ग मार्केट. इस समय काफ़ी ज़ोरदार बर्फ़ शुरू हो गई and just had my lunch and need to rush back to my hotel, country in suits, जो आई थिंक यहाँ से अराउंड 400 मीटर्स होगा. बट लेट्स सी, आई थिंक उतना ज़ोरदार नहीं हुआ है स्नो, सो आई कैन वॉक डाउन क्विकली. दिस इज़ अ डिज़ास्टर. द ओनली बैंक अवेलेबल इन सोनमार्ग JNK बैंक ATM, एंड वो भी अब बंद है. आई बिलीव दिस बैंक हैज़ बीन शिफ्टेड नाउ. गॉड नोज व्हाट नेक्स्ट. जैसे आप लोग देख सकते हैं ज़ोरदार बर्फ़ शुरू हो गए हैं. दिस इज़ सोनमार्ग, और जो रोड्स नॉर्मल लग रहे थे थोड़ी देर पहले वो एक वाइट ब्लैंकेट में कवर हो चुके हैं एंड इट्स क्वाइट हैवी. स्नो इज़ वेरी हैवी. जस्ट गोइंग टू द मेन रोड टू शो यू दिस. अब मेरी भी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि दूर तक वेंचर आउट करूं बिकॉज ऑफ दिस हैवी स्नो. देखिए कैसा हो गया है अभी सोनमार्ग. आपको हमारे होटल का मेन गेट तक ले चलता हूँ. इट्स अ वाइट ब्लैंकेट वेर एवर वी कैन सी. इट्स ब्यूटिफुल, बट इट्स सो ब्यूटिफुल. रूफ्स देखिए, बिल्डिंग रूफ्स, दे आर क्वाइट सो ब्यूटिफुल. पूरी सफ़ेद चादर सारे रूफ्स में. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सोनमार्ग. अब ये है हमारा मेन गेट. जस्ट हैव अ लुक. The snow has been falling for the last 1 hour and probably ज़रा और ज़ोरदार स्नो होगा तो the snow levels will start rising and जो पूरा सारे रोड्स भी कवर हो जाएंगे पूरे बर्फ़ में. बर्फीली आंधी, बर्फीली तूफ़ान, जो इसे कह लीजिए. देखिए कैसा है ये रोड. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. टूरिस्ट बहुत कम नज़र आ रहे हैं. पता नहीं क्या रीज़न होगा, बट आई जस्ट होप वी हैव मोर टूरिस्ट आउट हियर. ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. चलिए आपको फिर वापस ले चलता हूँ बिकॉज द वेदर इज़ ऑल्सो सो वेरी फ्रीजिंग. एज इट स्टार्ट स्नोइंग मोर, द वेदर इज स्टार्ट गेटिंग सो सिवियर. सिर्फ मेरे ही फुटस्टेप्स नज़र आ रहे हैं मुझे. सीम्स कोई और वेंचर आउट नहीं कर रहा और मैं एक ही हूँ जो बाहर घूम रहा हूँ कैमरा लेके. चलिए आपको फिर ले चलते हैं होटल में बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी हैवी नाउ. पॉसिबली कल सुबह जब मैं बाहर निकलूँगा तो दिस विल बी अ कंप्लीट न्यू टर्फ, अ कंप्लीट न्यू स्टोरी. अब जैसे मेरा फुटस्टेप्स देख सकते हैं आप. I am the only man who is venturing out and roaming around near the hotel. बाकी जितने कम टूरिस्ट आए हैं सभी अपने रूम्स में ठहरे हुए. So this is what Sonmarg is today. A true heaven, an icy heaven. Oh. But in the icy heaven I can see a car
stuck up. This is not what we intend. आइए but behave responsibly, act responsibly. I believe it is getting more and more chilly now, क्योंकि मैं काफ़ी layers of woolen clothing, warm clothing पहना हूँ, so it is, I am feeling comfortable, but the road is getting slippery. Let's get in. The least we can do is to stay indoors during such a snowstorm. चलिए अभी let's go indoors. You can see the snow, how severe it is, how strong the snowflakes are. चलिए अभी अंदर चलते हैं. Let's not be stupid enough to just loiter around in this snow. चलिए अंदर चले के चलता हूँ आपको. Let's get in. I will have more for you tomorrow morning, and so I will show you this whole area of how it looks like. See you for today. See you tomorrow. Good night. Hello guys, so we are starting a new day in Sonmarg, and today's plan is to go to the Tajivas glacier, which is a beautiful tourist destination in Sonmarg. So we are starting now, so we are waiting for the cab. It seems it is quite snowy out there, so to go up till the glacier it's not allowed, but the car will drop us at a point which is near the glacier, close to the glacier. We will show you those points. So let's begin the journey. ये घोड़ों का काफिला जो जिस तरफ जा रहे हैं, दिस इज़ द पाथ वी नीड टू टेक। और अगला जो डेस्टिनेशन होगा दैट विल बी द एज दे कॉल दिस एज बजरंगी भाईजान का लोकेशन, जो बॉर्डर का जो सीन हुआ था वो। चलिए आगे चलते हैं, आपको वो पॉइंट भी दिखा देंगे। चलिए, दिस इज द पॉइंट वेयर बजरंगी भाईजान वाज शॉट एंड द बॉर्डर एरिया व्हाट वाज शोन आउट हियर।
ट्रैकिंग तो काफ़ी किए हुए बट इस तरह का स्नो ट्रैक मैंने कभी किया नहीं है, जो इतनी थिक स्नो से चलना पड़ रहा है, बार बार पैर स्नो के नीचे जा रही है, बट दिस इज लाइफ. बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्मॉल एडवेंचर टू ताजीबास. थैंक यू फॉर योर टाइम. फिर मिलेंगे नेक्स्ट एडवेंचर के साथ. अभी अब तक कुछ प्लान नहीं किया है, बिकॉज सोनमार्ग यू कैन नॉट प्लान एनीथिंग, थिंग्स हैपन randomly. So let's see if we are able to go to 0 point. मैं धंस गया था पूरा बर्फ में. तो if we are able to go to 0 point, we will try to do it. और if we are able to even see Zojila from a distance, we will do it. Good morning friends. अभी इस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम सोनमार्ग. वैसे तो हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया है, बट टुडे वाज द प्लान फॉर जोजिला. जोजिला इज़ द हाई माउंटेन पास, हिमालयन पास, विच विल कनेक्ट आवर श्रीनगर विद लद्दाख. बट इट सीम्स हमारा बैड लक है, जो वहाँ पे ज़ोरदार बर्फ़ चल रहा है एंड द पास इज़ क्लोज फॉर टुडे. सो टफ लक, बट एनीवेज वी are coming to the end of Sonmarg, so it doesn't matter much, क्योंकि नज़ारे तो ये यहाँ भी काफ़ी मिल गए हमको. So let's see, we are planning to just go to the river front, Sindh river, and आपको Sindh river दिखाते हैं. Let's begin our journey today. It won't be a big one, but we just hope we can get some good insight into this river. काफ़ी हवा है तो मेरा वॉइस इज़ ब्रेकिंग. इट सीम्स माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर. आई जस्ट होप द कैमरा कैन डू जस्टिस टुडे. कम ऑन, लेट्स बिगिन आवर जर्नी. वी आर गोइंग डाउन टू द सिंध रिवर एंड few snaps on the Sindh river and we are back, and we are winding up this from Sonmarg. The next journey we would be heading off to Srinagar, and the houseboats is what we are planning now, and I just hope this is going to be good. So हमारी जर्नी जोजिला के लिए हमने प्लान की थी, but doesn't look possible today because of this heavy snow, and we are in the wrong time of the year, that is in winter. वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जैसे जोजिला, ला मीनिंग पास, यहाँ के लद्दाखी लोकल लैंग्वेज में ला मीन्स पास, तो लोग यहाँ जोजिला पास कहते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज दैट वुड मीन दे आर कॉलिंग इट एज जोजी ला, जोजी पास. सो जस्ट कॉल इट एज जोजिला और जोजी पास. प्रेजेंटिंग टू यू द ब्यूटिफुल सिंध रिवर, winding its way through the mountains. Let's check if we can go near this, otherwise have a wonderful look at this river, one of the beautiful sights at Sonmarg. Hope I can zoom in. Yeah. Okay guys, this being an army area, drones are not allowed here, so just take care, don't bring your drone or you are likely to get arrested. Let's go move ahead. दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी नज़दीक नहीं जा पाएंगे सिंध रिवर, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं इसका लैंडस्केप कैसा है एंड काफ़ी रिस्की है इसके नज़दीक जाना. एंड कुछ टनलिंग का काम चल रहा है, टनल का काम चल रहा है, इसकी वजह से एरिया काफ़ी रिस्की हो गया. Anyways, I'll go to this edge of this place, I'll show you this river, max. Luck हमारा, if we can hear this roaring of this river. But anyways, this being peak winter, ये नदी उतना उतरता नहीं है इसमें. Let's have a look. काफ़ी बहुत हवा है इस समय. ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाऊँगा, बट जहाँ से दिखा सकता हूँ आपको वहाँ से दिखाऊँगा सिंध नदी.
ओके सर, ये देखिए सिंध नदी, फॉर योर नॉलेज। ये देखिए खूबसूरत सा सिंध नदी है, बट अप्रोच पाथ इज़ नॉट अप्रोचेबल। यू कैन सी हाउ द टेरेन इज। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू बिफोर आई लीव सोनमार्ग। और अब वहाँ देख रहे हैं कुछ काम चल रहा है, कुछ मशीन्स वगैरह दिख रहे हैं, तो दैट इज़ द टनलिंग वर्क। सो दिस वाज द टूर ऑफ सोनमार्ग एंड वी wish goodbye to Sonmarg now on our next expedition, and बाकी के सारे वीडियोस में आगे कवर करूँगा। So thank you very much for watching my video. Hope to see you in the next adventure back to Srinagar. Take care. Bye bye. And thank you for your time. अब दोस्तों मैं आपको वेस्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, दैट इज़ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुलमार्ग की ओर। आप जानते हो कि गुलमार्ग जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्की डेस्टिनेशंस है, एंड जनवरी फरवरी में जहाँ पर वहाँ ज़ोरदार बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर स्की करने के लिए आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम स्कीइंग, जैसे हाईएस्ट गोंडोला यहीं पर स्थित है यहाँ गुलमार्ग में, और आपको यहाँ के मार्केट प्लेसेस भी मैं दिखा दूँगा। वैसे तो दोस्तों गुलमार्ग श्रीनगर से 2.5 आवर्स है और सोनमार्ग से अराउंड 5 आवर्स है। तो जैसे आप अगर 5 आवर्स मैनेज कर सकते हो तो आप डायरेक्ट ट्रैवल करो, या फिर श्रीनगर में यहाँ पे हॉल्ट ले सकते हो। मैंने तो श्रीनगर में हॉल्ट लिया था और मुझे इनोवा श्रीनगर टू गुलमार्ग इन्होंने 2500 चार्ज किया था। सो दोस्तों विदाउट फर्दर डिले हम चलते हैं हमारे गुलमार्ग के एडवेंचर की ओर। ये होगा बेस्ट ऑफ कश्मीर गुलमार्ग। Good morning guys, hello and welcome to yet another episode of Vagabond, a travel for a purpose. So दोस्तों आज का प्रोग्राम है, हम गुलमार्ग में हैं and we are planning to check out the famous Gulmarg gondola today, but we will try to get the tickets because actually this is covered by people। जैसे हम अगर उनसे पूछे कि टिकट्स कहाँ मिलते हैं तो वो सारे हमें कवर कर देते हैं और बोलते हैं कि टिकट आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आपको हमारे थ्रू जाना होगा और 2000 रुपये लगेंगे पर टिकट। ऐसे मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ चीटिंग मेंटालिटी गोइंग ऑन हियर एंड पीपल जस्ट come to you in the name of guides and they start looting you for the sake of nothing. So we will try if we can get this gondola tickets today, और अगर gondola नहीं हो रहा है तो we will show you a tour across the Gulmarg market. So let's begin this journey. Come, I'll show you around. आगे बढ़ते। So behind me is my hotel Grand Mumtaz, and just I've got out of this hotel and moving towards the gondola. And just as I told you, I mean there will be a lot of at least about 50 to 75 guides and goda chalaks who will be harassing you on the way. I mean I literally mean it, they will be harassing you on the way. I mean if the thing I even I cannot blame them fully because यही उनकी रोजी रोटी है. I mean for them they don't work, they don't operate 12 months a year.
but the time they operate, they just keep on harassing people and just getting money out of them. And I believe if these things were stopped or these were minimized, this place could be truly heaven. The place is beautiful. I mean, you can see the forest on both the sides, and good lush vegetation, and ample of oxygen around. So it feels comfortable even walking long distances. And just the problem out here is the toots. They keep harassing you, and they have a very bad mentality. When it's like, if you say no, they would ask you why you are saying no. I mean, we are, as citizens of India, we have this rights, we have the constitutional rights to say yes or no to whatever we want to. But these people harass you like anything. Why are you saying no? My idea is to just try this ticket for the gondola. If I am not getting the ticket, there is no compulsion that I need to see this gondola now, because it has already been 3 times I have come here, and this is my 4th time in Gulmarg. So there's no compulsion from my side. So let's proceed ahead. I hope you can see this gondola at a distance, the booking office. And the mountains above, those are where we are trying to reach. But as I told you, already I have been there thrice, so there is no compulsion that I should go there now. If I get the tickets, well and good. If I do not get the tickets, I will feel the beauty of this place, Gulmarg. And I will show you across the golf rings and the skating rings, the Shiv temple, which is at the distance, and finally the Gulmarg market. So let's check the ticket window now. अच्छा सर जी, कितना टिकट बनाना है आपका? ये कुछ नहीं बनाना है, मैं कर लूँगा। जी वीडियो बंद करो। क्यों? आप लोगों का वो ये नहीं रिकॉर्ड करने का, इसलिए आप लोग आगे जैसे तंग करते हो हमको, कस्टमर्स को, इसके लिए सॉरी सर, आपका बात मैं मान रहा नहीं हूँ, सॉरी है। So luckily we have got the tickets for phase 1, that is 3 tickets for phase 1, and हम लोग आगे बढ़ रहे हैं phase 1 की तरफ. It seems the tickets for phase 2 would be available at a ticket counter at phase 1 itself. तो वो हम वहाँ जाके ही try करेंगे. So we are starting our journey to this magnificent gondola right now. And just a piece of advice that don't trust these touts and all these people. ये मैंने directly किया हुआ है, and it took me max to max 15 minutes because 90% people are depending on these, so counter is always free. So ये this is a small piece of advice that I would like to give you, and it's a very valuable piece of advice. So चलो आगे बढ़ते, we will take you through this beautiful gondola ride. So this is the entry for the gondola where we need to ascend these steps, and it's a waiting room for us. So let's proceed. I'll show you the entire journey. This is where people are going in towards the gondola. Let's move.
they have seats to sit. If you are feeling tired, you can sit for a while. No need to just throng these lines with everybody. Being a corona time, this distancing is required, but I don't see distancing even to the core out here. And people are there, and for old people, they can have a seat. This is the final gondola. I mean, took us about 1 hour to reach this, and finally we have reached the cable car. Just need to capture one and proceed on our way to the first phase, that is Kongposh. As you can see, we have reached Kongposh, and hardly there is any snow out here. So it seems everybody is moving now to the Afrabat, the second phase, which we can see on top there. That is the Pir Panjal range. Now we are planning the same thing. Let's see how this goes. I will take you ahead and I will show you the sights as we proceed on this journey, on the gondola journey. This is phase 1, Kongposh of the Gulmarg gondola.
As you guys can see, this is the line for the second phase of the Gulmarg gondola, which we are moving towards Afarvat, where we expect to see some snow. That is the first vision of the Gulmarg snow. And this is actually the red colored gondola, and you can just see the gondola starting off with, and this will ascend to the summit of this mountain just behind us. That is the Afarvat mountain. We are just heading towards it, and we will cover the entire thing as we proceed ahead. So guys, welcome to the Afarvat summit. This is the second phase of the gondola, and this is where we have reached now. You can see those mountains out there. Dilfek mountains hai sare. चलिए यहाँ से थोड़ा, but it looks very slippery. This road looks very slippery. Not sure how much we can hike through this slippery turf, but still let us try going a little ahead. So guys, I am not sure how much the camera is able to capture, but the mountain which you can see at a distance is the Nanga Parbat, which is in Gilgit at the moment. I'll just take my camera. Today we are very lucky to be seeing so many mountains out there. The Brahma, the Sickle Moon are very clearly visible today. I will also post the zoom down images of these mountains, and we are very lucky to be seeing all these mountains into today's journey. I mean, I have not seen them in such a beautiful vicinity. You can see these other mountains also from this Afarvat summit. Okay guys, I think this is all we can stay here. I think we should start our journey to the bottom now, to the first phase, and then to the normal Gulmarg. Let's proceed on our journey back. I hope you guys have enjoyed this journey to Afarvat summit. This is at 14,000 feet.
I will give you the logistics after I reach the bottom. See ya. So this was the adventure of the Gulmarg gondola. Thank you for accompanying me on this beautiful journey. Now we are back to Gulmarg base and to start off our other adventures to the market or to the temple, but none is as adventurous as this journey which we had just been to. Thank you for your time. Have a good day. So guys, आज का plan है we are in Gulmarg and we want to explore the common regions of Gulmarg. That is the meadows and the market, the Shiv temple if possible. The Shiv temple तो यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है. जो आपकी कसम में जो हमारे काका ने गाया था जय जय शिव शंकर, तो वो that temple is popular tourist destination out here. तो ऐसा है कि हम अभी निकल रहे हैं, आज लेट निकल रहे हैं बिकॉज वी डोंट नीड टू गो टू सो मेनी प्लेसेस बिकॉज येस्टरडे हैज़ बीन अ वेरी हेक्टिक डे. हम गुलमार्ग गोंडोला तक ऑफरवत तक जाके आए सेकेंड फेज तक. सो इट वॉज बीन अ क्वाइट टायरिंग डे येस्टरडे. सो टुडे वी वांट टू टेक इट अ बिट ईजी एंड just roam around the main roads of Gulmarg and show you the meadows. At this moment the meadows are green and they are and you could probably see a green beauty, but Gulmarg इसके लिए famous नहीं है. But we know Gulmarg as a popular ski destination. तो जैसे white cover होगा तो the beauty looks unique. So today I will show you these places today. I mean and my earlier tour it was all white or white carpet all over. So I will again show you the comparison of how it normally looks, and unfortunately there is no snow today, so we will need to be content with green coverage. So let's begin the journey. Let's proceed towards the market. चलिए आप लोग, let's go. क्या हो गया? क्या करने का आपको? जाने का तो जाके आओ ना यार. मैं जाके आया ऑलरेडी ऊपर.
बोला हो गया था? कब का? कुछ साइकिल वगैरह करोगे? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं. So this was the green cover I was talking about. And you can see it is lush greeneries out here. But this is not what Gulmarg is famous for. And I'll show you the comparison which I had taken during heavy snowfall. You can see this lush greenery out here. This is the meadow actually, Gulmarg, meadow of flowers. And you can see the temple out there. There is a Shiv temple and we are actually proceeding towards the Shiv temple, which comes once we cross the market. So you can see this lush greeneries out here, and I will continue taking such videos as I proceed ahead. So guys, we have reached the end of this road where we can see the tourist center and some few shops on the market side itself. You can see all those buses, Volvo buses stopping out there, and the tourist cabs. Now I'll show you the temple also, the famous temple which appeared in few of our old Hindi movies. So that is the temple which I was talking about. Looks like a really long distance, but it's not very far. I mean, it is an approachable road now, since there is no snow on this turf. So let us now try to proceed and reach that temple. But before that, एक कावा हो जाए. इस मार्केट में बहुत स्वादिष्ट कावा मिल जाता है, तो वही पी के हम आगे बढ़ेंगे. या तो आज मंदिर चलेंगे या फिर let's see, if the temple is closed today, we might return back. In the distance you can see the small structure. That is the temple that I was talking about. This small structure which you can see, this is the temple I was talking about. So we are now trying to reach that temple. Let's see if we can do so. But just another view of these beautiful meadows. You can see this. This is the marketplace. You don't need any pony or anything for this. You can just walk down. Takes about 15 minutes. Takes about 15 minutes from the gondola to the main market. So this is what I wanted to tell you. The ponies would charge you about 1000 rupees per head, but there is absolutely no need for such a pony. You can surely walk down
Takes about 10 to 15 minutes. Let's move ahead. So you can see these ponies out here. This is where we enter Gulmarg and the ponies are waiting for us. And they are charging about 1000 rupees per head till the Gulmarg gondola. But as I told you, it is not absolute, I mean, there is no need for this. But if you want to enjoy, it is your choice. So this is the temple I was talking about, the temple that featured in the old Hindi movies like Aapki Kasam, etc. So this is the Shiv temple at Gulmarg. So we are moving towards this temple. So you can see this approach path where there are a lot of steps out there. We are proceeding towards those steps and we are trying to visit the temple. I'm not sure if videography would be allowed inside the temple, but we will try our best. If not, this is for your information, the famous Shiv temple at Gulmarg. Let's proceed. So friends, we have reached this Shiv temple and lots of tourists are there we are not allowed inside the temple, but we can get the darshan from outside. So let's move ahead. So दोस्तों, ये है फेमस जो शिव टेम्पल मैं जिसकी बात कर रहा था. अंदर है शिव जी का पिंड है, बट आई थिंक शिव जी का लिंगम, बट वी आर नॉट अलाउड इनसाइड. तो सिर्फ बाहर से ही सभी इसका दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं. एंड ये सीनरीज बहुत खूबसूरत है यहाँ पे मंदिर के आसपास. तो ये सीनरीज लोग कैप्चर करके लौट रहे हैं. यू कैन सी दिस. इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट गुलमार्ग. सो व्हेनेवर यू विजिट गुलमार्ग, आपको इस शिव मंदिर में एक बार विज़िट करना ही चाहिए. चलिए, मेरे ख्याल से अब हमें लौटना चाहिए. Just another shot on the approach path of this Shiv temple and the sanctum. So this is how the temple has been preserved. So that's all I wanted to show you out here at Gulmarg. So जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमने एक प्रदक्षिणा भी की है. और ये शिव धारा जो आपको बीच में दिख रहे हैं, वी आर नॉट सपोज टू क्रॉस इट. तो मैंने वहाँ से 3/4 किया हुआ प्रदक्षिणा की हुई है और यहाँ से 1/4. एंड आई एम रिटर्निंग बैक टू द फ्रंट ऑफ दिस मंदिर. एंड अब इसके बाद मैं आपको उस प्रतिमा की, उस शिवलिंग की आपको एक दर्शन करवा देता हूँ. ये देखिए. Friends, we are heading back from the temple. And guys, we are in the middle of this marketplace where we have a good police station out here. Just in case something goes wrong with you, you can always trust or depend on the cops. So जैसे आप लोग देख सकते हैं, this is the market. यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं. And the quality is the same in all the shops, so you can take your pick where to have your food or to have it in your hotel. Just to show you that the marketplace, you can see this J&K ATM. This is the only ATM available on the entry to Gulmarg, on the entry to the main gondola side. Let's proceed ahead. I'll show you the main gate and the way to the Gulmarg gondola, because so many people keep asking me as to where to proceed for the gondola, and the Goda Chalaks keep misguiding them that you cannot reach the gondola without a horse. So let me show you where exactly we need to go entering Gulmarg. So this is the main gate where we are entering the actual Gulmarg, the two tourist destinations. As we enter, you can see this road leading. This is the road which will directly lead us to the Gulmarg gondola. This is where we need to go. This road which you can see, right, we have just entered the gate, and this road is actually leading to the gondola. This road is straight and there is no twists and turns. Just need to go straight 15 to 20 minutes and you reach the gondola. You don't need any horse or anything for this. Just don't get misguided anytime. Just walk straight and this will lead you directly to the famous gondola. That is what I wanted to show you. Come, let's go ahead. I'll show you the path
because my hotel is actually, I have to take a right from node, and the gondola is actually straight ahead from that node. So I will show you that node also. Let's go ahead. And to accompany you is this golf course, beautiful golf course, which looks different during the snow, which I think I have already shown you during this video. The 2 BHK huts again of the J&K TC. Stay out here is a different experience altogether. I hope you can see the road going to the right is the hotel road, which will lead to all our hotels and restaurants, and the road going straight is going to meet the gondola. So the hotels, I am not going to go in much detail. We have hotels like the Khyber Spa. Then we have a hotel that is the Grand Mumtaz, in which I am staying. We have a hotel Alpine, which is also a good hotel. Then we have Khalil Palace. So Khalil Palace is also a good hotel, and the food is quite good out there. So I'm not going into much detail because the prices will always vary provided from where you are going to book. If you are opting for a booking.com or Agoda or any of those, the prices will still fluctuate season by season. And if you want to book the J&K TC huts, they are cozy huts actually. You could do it from the Jammu and Kashmir website, that is the tourism website. The only problem with the J&K TC huts are the flush on the toilets don't work, and for the hot water they use the coil, they use the domestic coils. So you need to remove the coil, then use the water, or you get a nasty shock. So apart from that, the huts are quite comfortable. So you can opt for them as well, the Jammu and Kashmir tourism huts, 1 BHK, 2 BHK and 3 BHK. So that's all I wanted to show you on Gulmarg. Just for the final, I would like to show you the approach path to the gondola. Okay guys, so I'm on the junction where you can see a car coming from that place, the road going straight. That is the place you need to follow to reach the Gulmarg gondola. So you don't need to ask anybody or follow the horses for this. Just you can march ahead. From the main gate, this will take you max 15 minutes depending on your speed. So that's all I wanted to show you from Gulmarg. So I am proceeding towards my hotel now. So I would be proceeding to my hotel from this. I end this vlog here on this Gulmarg beautiful journey. Thank you very much for accompanying me, and thanks for your time, and keep rocking as always. Bye bye. Back to Srinagar.
So guys, today we are planning to hit out on the Dal Lake and check out this beautiful adventure of Srinagar. Srinagar is mainly known for its houseboats and the shikaras. So we are planning a ride on the shikara, or this is actually a truly different experience altogether. चलिए आपको ले चलते हैं शिकारा राइड पर, and we'll show you the beautiful Dal Lake and the houseboats and the open Dal Lake. Mainly see when you take the shikaras, it is more important that you venture out into the actual Dal Lake rather than just roaming around in the markets. The markets are also beautiful that way in the Dal Lake, but हम ये try करने वाले हैं कि शिकारा को हम outer Dal Lake की तरफ ले चलें, main Dal Lake. That is where we have the Kabutar Khana and the other beautiful places out there. So let us begin this adventure and join me on this. Most welcome. Let's begin. So I'm starting this tour from this Himal Hotel, which is a JNK property, which can be booked only from the JNK site. Some interesting properties in this area. You can see this Hotel Malik, which is also a good hotel and a cost-effective one. And next to Hotel Malik, this is Hotel Sunshine, which is a good Vaishno Dhaba, and even for a stay, they charge about 3,000 to 3,500. Now I'm not going into the details of the prices because prices will differ as per the season and from where you are booking them, like booking.com, and there are so many sites which will fluctuate the prices. Even if you check Trivago, they will have different rates for different websites. They will club it everything into one shot. Just showing you the good properties out here. Hotel Sunshine is a good one. Punjabi Darbar, you can see, that's a good Vaishno Dhaba. We are going ahead. We can see Punjabi Rasoi, Delhi Rasoi rather. The Delhi Rasoi, this is also a good vegetarian outlet. And then next to the Delhi Rasoi, you can see this hotel. There is a Welcome Hotel out there. This Welcome Hotel is a very good property out here, and it is just next to the tourist taxi stand. So let's look at that property also. The benefit of these properties is we are just next to the Dal Lake. This is actually ghat number 7, and you have all these ghats lined up in this Dal Lake. That is Hotel Welcome, and a very good property actually. I have been following this for the last so many years, and the quality is always maintained at optimum. And you can see this Dal Lake. You can take a morning walk in this area. It's a wonderful place to be in, and all those houseboats lined up. This is the site which we see early in the morning. When you get up from your balcony, this is what you can see. And look at this, the taxi stand. You don't need to hunt for a taxi every year and there. And if you book the taxi from your hotel, it will be damn expensive. They will add everything out there. And this taxi stand will not do that. They will charge you as per the government norms. So just these interesting places I wanted to show you. And there are more hotels out here, but I would recommend picking up a hotel till this taxi stand. Whichever hotel you can get it is good for us. Some interesting places, and as you can see, I showed you the ghat number 7. This is how it proceeds, ghat number 7, 8, 9, 10. So my recommendation is, as I had shown you before, prefer a shikara from ghat number 13. That is when the shikara goes into the outer part of this Dal Lake, and that is the beautiful part actually, till the Kabutar Khana.
The problem is actually if you pick up shikara from any ghat which is less than 13, these people would deliberately take you into the market and try to earn some commission from those shops which are situated in the market, like having you buy some woolen clothing or some wooden architectures, and we actually don't need it. We don't need it. We have got some government good shops for shawls and those things. So always prefer the shikara from ghat number 13 and ask him to go into the open and haggle on the cost. They would charge you something like 2000, 2500, but don't go above 1000. I mean, we have to take care of their life also. So don't be very cheap. Don't haggle on 100 or 200 rupees, but at least you can say 1000 for one shikara. That is a win-win situation for you as well as for the chalak. So this is what I wanted to show you on this boulevard road. So we are starting the shikara right now from ghat number 11, from ghat number 12 near Nattu. This is what Srinagar is known for, the Dal Lake and the moving shikaras. Now this is what we call as the honor of Srinagar. The shikaras moving all over. We are also in the shikara right now, and you can see this beautiful houseboat lined up on one corner. Now see this how these shikaras have lined up everywhere. Now this is the beauty of the Dal Lake. Now see this, there are some floating stalls you can see everywhere. हेलो फ्लावर अच्छा फ्लावर नहीं जी, thank you. फूल का बीज Thank you. You can see these beautiful flowers. He is selling us the seeds for these, and which we can plant it at our hometown. You can see this beautiful Dal Lake, and we are moving in the shikara, and he is taking us to the market actually. These are the houseboats situated at the far end actually. When we move around the boulevard road, there is a line which we can directly view, and there is another line which is only visible after we cross ghat number 12 or 13. So these are those houseboats which are visible after ghat number 12 or 13. That is where we normally intend to take this shikara, so and we can see the beauty actually of this Dal Lake. So there are various types of people selling their goods and services. You can see a photographer out there who is actually on the shikara, and he's taking photos of the tourists. So this is the beauty of this lake, where we have all these people coming up to you, but sometimes it even poses as a nuisance to people. I mean, for some people who only come here to enjoy the lake, it poses as a nuisance for them. So let's not worry about all that, and let us just enjoy this ride.
We are now moving through the Golden Lake. What we can see in the vicinity are the houseboats standing on the Golden Lake. This is a part of the Dal Lake actually. One of the point which these guys have made actually, but it is still the Dal Lake only. What we can see here is the floating land, the floating farm, which vegetables are grown by the local farmers. It's quite some rush today on the Dal Lake. We can see some sort of a traffic jam out here. रास्ते पर तो काफ़ी देखे ट्रैफिक जैम, बट पानी पर हम पहली बार देख रहे हैं. So enjoy this scenery, and this is this houseboat standing at some distance behind the shikara. Those are the houses in the middle of this Dal Lake, only approachable by the shikara. All these beautiful shikaras moving around in and out, and they seem some traffic jam is ahead. This is the first time we are seeing a jam on water. Till now we have seen traffic jam on the land actually, so this is some unique sight for us. Enjoy these markets, enjoy these beautiful buildings in the middle of the Dal Lake. What you can see here is the actual village where these villagers stay in the middle of the lake.
Now this is the famous woolen shop in the middle of the Dal Lake. They call it as the factory outlet, where you can get your woolen clothing very perfect, good material actually. Let us proceed. वो चलते हैं वहाँ पे. You can see all these shikaras lined up, being a popular tourist destination. Now as you can see this, we have just purchased about 4 shawls costing about 2500 each, and they are very good shawls actually of the Kashmiri make. We don't get this anywhere else, at least I have not seen such a smooth texture. So this is the place where we can actually get some good material. You can see this. Your shikara chalaks can bring you out here. So what do you feel about this Dal adventure? Not much, right? We went to they took us to the markets of the Dal Lake, and we ended up buying some few shawls out there and some good shops actually. But the actual adventure, we would like to venture out in the main Dal Lake. There would be no shops. It would be free of everything. So let us try this out. Let us try this adventure.
So friends, thank you very much for accompanying me on this Shikara journey, and it was a fabulous one, and it was an out of the world experience actually. This was from Ghat 11 at Boulevard Road, Dal Lake. So signing off from here, we will meet you in the next adventure. Thank you, bye bye. Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.